Good evening, sir. Good evening, ma'am. Just let's wait for 2 more minutes. Sure, sure. Okay. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon to all the participants. And we have with us uh, our resource person, Mitali Mukherjee, ma'am, with her new spell on managing emotions. So we are looking forward for the training to be another a successful learning for all of us and enjoying as well as say the learning one. So we'll request Mitali ma'am on behalf of our Aryavata Sahodaya School Complex, our president, to kindly Thank you so much, start sir. the. Thank you, Aryavarta Sahodaya, for giving me this opportunity to interact with this learned group. And I know it's very cold, so you can keep sipping tea whenever you wish to. And please allow me also. And I don't know how you are feeling emotionally right now. Actually, this cold weather makes us a little dull. So, in this weather, I think this is a very wonderful topic that we're going to discuss today, and that's managing emotions. So, let me first share my screen. Okay. I hope somebody's recording because I've not got the message till. Okay, fine. So, I'll put it in the slideshow view so that it is easy for us, all of us, to view the screen. Just a minute, sir. There are so many pop-ups continuously, messages keep on coming. Your WhatsApp, maybe. Not my WhatsApp, sir. I mean, people writing here, good evening, and all that.
Okay. So I want it to be in the slideshow, but fine. Is my screen visible to all of you? Yeah, absolutely. I hope it's okay. Yeah. Fine, fine. Now, see, emotion is a very common word. All of us know what are emotions. But do we actually know what are emotions? Do we actually understand that what kind of emotion is working within me right now? Because सबसे पहले हम लोग कहते हैं ना कि नॉलेज सबसे सबसे पहला पॉइंट होता है, सबसे पहला पायदान है. अगर हमें ये पता होगा कि what is playing within me right now, then we can control it or let it move ahead. For example, suppose somebody is feeling very happy. तो वो क्या करेगा? अपने हैप्पीनेस को स्प्रेड करेगा. लेकिन अगर किसी के अंदर, मान लीजिए मेरे अंदर बहुत जेलस की भावना हो रही है इस वक्त, कहीं हिमांशु सर ने इतनी अच्छी जैकेट पहनी है, मेरे पास ऐसा जैकेट है ही नहीं. तो अगर मुझे पता चल जाए कि मिताली मुखर्जी, तुम्हारे अंदर जो इस वक्त इमोशन काम कर रहा है वो कोई पॉजिटिव इमोशन नहीं है, वो एक नेगेटिव इमोशन है, वो जेलसी का इमोशन है, तो तुरंत मैं क्या करूंगी? अपने उस इमोशन को कंट्रोल करूंगी कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए. आई शुड नॉट बी जेलस ऑफ माई डियर फ्रेंड. मैं ये सोचूंगी. लेकिन बहुत समय होता यह है कि हमारे जीवन में अगर आप थोड़ा सा आंख बंद करके सोचेंगे, डियर एजुकेटर्स, you will find that you will come to know that 99% of our problems are because of the reason that we don't know what is going on within us. And that is why we cannot control it. And that is why sometimes we do such things in our life which are not expected. और कुछ ऐसी चीजें करते हैं हम लोग for which we regret later on. So as an adolescent, because I'm teaching you this, I'm taking this session so that you can go and help your students out there in school. हाँ हेलो. तो हाँ अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर में, थोड़ी देर में. ठीक, 5:30. may I continue? Yes, Mitali ma'am, you now continue. You can continue. Okay. So, what was I telling you? Yeah, I was telling you that if we know what is happening within us, then we will be in good control of our life. Now, this is not only for the students, it is even for the adult people like us. आप तो समझिए ही और अपने बच्चों को भी समझाइए. तो मेरा पर्पस इस सेशन का ये है कि मैं जिस तरीके से सेशन को फ्लो में ले जाऊंगी, अगर आप उसी में से छोटे छोटे टिप्स निकालें और अपने बच्चों के साथ डिस्कस करें, तो मुझे पूरी उम्मीद है आपके बच्चे भी ये समझेंगे कि उनको अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है. क्योंकि आपके पास अधिकतर जो बच्चे हैं स्कूल में, दे आर मोस्टली एडोलेसेंट्स. And you must be knowing this, that adolescent is a period of time when there's a turmoil of emotions, when there's a tsunami of emotions. हर वक्त हम इमोशंस में आ जाते हैं. अभी हंसते हैं, अभी रोते हैं, अभी तुरंत खेलने लगेंगे, अभी तुरंत जेलस हो जाएंगे, अभी सुसाइड कर लेंगे, अभी मतलब कुछ भी हम लोग कर सकते हैं. एडोलेसेंट के अंदर इमोशंस का एक व्हाट टू कॉल इमोशंस का एक बाढ़ आता है और वो इतना अनकंट्रोल्ड होता है कि उस इमोशन के बहाव में आकर मेरा एडोलेसेंट बच्चा कुछ भी कर सकता है. तो एज अ टीचर वी मस्ट बी वेरी 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 पर्टिकुलर अबाउट दिस कि मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं कि इमोशंस क्या है, इमोशंस क्या फीलिंग्स है तुम्हारे अंदर इस वक्त. पहले उसको आइडेंटिफाई करो, फिर उसको ऑब्जर्व करो और फिर उसको रेक्टिफाई करो. तो हमारा पहला फेज होता है इमोशन मैनेजमेंट में इमोशन आइडेंटिफिकेशन. व्हाट काइंड ऑफ इमोशन इज प्लेइंग विद इन मी राइट नाउ. सो हम इस पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स. ये है आपका आज हम जो अवेयरनेस डेवलप करेंगे वो. इसमें मैं बेसिकली आपके 6 सब मॉड्यूल्स को टच करने की जल्दी जल्दी कोशिश करूंगी. थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे रही हूँ. पहला है कि आई शुड नो माय इमोशंस. जैसे मैंने आपको बताया, आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप. Then how to manage my challenging emotions, how to do the SWOT analysis, identify one's core strengths, understand mental health, and practice mindfulness. These are the 6 sub-modules that I would like to touch today. So first of all, let us understand how to identify emotions.
You can take a screenshot of this. It's a very beautiful set of examples. And this for this PPT, I'm thankful to NCERT. NCERT has actually prepared this PPT on mental health of students. This is not prepared by me. So this has got lovely examples and lovely case studies. Any time of the session, if you feel like keeping something, capturing something, please use your cameras, take a screenshot of the same. Now, the very first thing is, देखिए यहाँ पे कुछ situations दिए हुए हैं. जैसे पहला situation, you can use your chat box and answer. What I want is, when I read the situation, you will tell me what is the emotion within. कौन सा इमोशन प्ले कर रहा है. वहां मल्टीपल आंसर्स भी हो सकते हैं, कोई भी आंसर गलत नहीं है. ठीक है, तो आप अपने चैट बॉक्स एंड फिंगर्स को यूज करिए फटाफट. It is your birthday and all your friends are about to come to your place for a party. कैसा फील करेंगे आप? What is the emotion right now within you? Some answers in the chat box, please. What will excited? Very good, very good. Excited, happy, beautiful answers. Excitement. Anything else? Excitement and happiness. You know, very good. Normal emotions. लेकिन मेरी my dear teachers, अगर मैं कहूं कि it's my birthday and my friends are going to come to my place, but I am in stress, क्या ये सही होगा? How many of you think that the child can also be in stress? Is it possible or not possible? Yes or no? Is it possible or not possible? Very good. बहुत लोगों ने yes भी कहा है, बहुत लोगों ने no भी कहा है. मैं आपको ये समझाती हूँ why yes. बहुत लोग, लेकिन मैक्सिमम लोग एक्साइटेड एंड हैप्पी हैं. लेकिन हो सकता है मेरा 2 बच्चा क्लास में ऐसा है, बोल से मैम मुझे बहुत स्ट्रेस होगा, मैम मुझे वॉशरूम जाने का मन होगा बार बार, मैम मुझे टेंशन हो जाएगा. हो सकता है ऐसे 2 बच्चे हैं आपके क्लास में. उन्हें किस बात का स्ट्रेस होगा? मेरे फ्रेंड्स आएंगे कि नहीं, कितने बजे आएंगे, पार्टी कब शुरू होगी, खाना मम्मी ने बनाया वो उनको अच्छा लगेगा या नहीं, अरे मैं तो बोल रहा था होटल से खाना मंगाओ लेकिन मम्मी ने कहा नहीं घर पे बना देते हैं, पता नहीं वो खाना कैसा बनाओगे, पता नहीं मेरे फ्रेंड्स को मजा आएगा कि नहीं. ये सोचकर स्ट्रेस भी हो सकते हैं. अब आप कहेंगे भाई बर्थडे पार्टी है, फ्रेंड्स आने वाले हैं, स्ट्रेस कैसा? लेकिन आपको नहीं पता अगले के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है. इसीलिए प्लीज आप इसको समझिए that learn to identify emotions and those emotions will be varied. You cannot think कि अगर मैं एक चॉकलेट लेकर जाऊं तो मेरे क्लास में सारे बच्चे खुश हो जाएंगे. हो सकता है 90% बच्चे खुश हो जाए, 10% के दिमाग में यह है कि क्यों आज सर ने चॉकलेट दिया, क्यों आज मैम ने चॉकलेट दिया, जरूर उनको मुझसे कोई काम होगा, पता नहीं अब अगला क्या बोलने वाले हैं, लगता है कोई टेस्ट लेने वाले हैं, लगता है कुछ होने वाला है. Different types of people are there. Next, your examination results have been announced and your marks are much lower than what you expected. फिर कैसा इमोशंस होगा आपका? आपने उम्मीद किया था 80% आएंगे, आए 60%. क्या होगा आपका इमोशंस? प्लीज कैन वी हैव सम आंसर्स इन द चैट बॉक्स? Sad, you'll feel sad. Very good. Sad, sad. सारे का आंसर sad, sad, sad आ रहा है. कुछ और सोच सकते हैं आप लोग? sad के अलावा कुछ और? sad के अलावा क्या हम कुछ और सोच सकते हैं? Distress, very good. Unhappy, sad and unhappy are the same thing. Depression, disappointed, very much depression. चलो, depressed, very good. एक एटीट्यूड मैं बताऊं, कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि जब आप, मैं अपना चैट बॉक्स ऑन कर लेती हूँ, उससे मुझे ना आंसर्स देखने में आराम होगा. वेरी गुड. ऐसा भी हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स कि आपने सोचा आपको 80 आएंगे, आपको 60 आए. कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो ये कहेंगे चलो पास कर गया ना, इस सेशन में हो गया काम खत्म, लेट्स सी नेक्स्ट टाइम देखा जाएगा. अरे निकल लिए ना, लटक तो नहीं गए. कुछ बच्चे ऐसा भी सोचते हैं. सो वैरायटी बहुत है हमारे चारों तरफ. लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम वो घोड़े को जो 2 पट्टियां पहनाई जाती हैं आंख की तरफ, हम ना वैसे चलते हैं. हम सोचते नहीं एग्जाम में रिजल्ट खराब हो, बच्चा खुश कैसे हो सकता है? अरे ऐसा भी हो सकता है उस बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा एग्जाम में फेल होने से भी. दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल. सो इमोशन क्या है किसी और का, एक्चुअली ये समझना बहुत ही कठिन कार्य है जो हम टीचर्स को समझना पड़ता है. उनके बिहेवियर से समझेंगे. कैसे हम समझेंगे किसके अंदर क्या इमोशन चल रहा है? उस बच्चे के बिहेवियर से समझेंगे कि उसके अंदर इस वक्त क्या चल रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और सबसे पहले आप कुछ एग्जांपल्स दीजिए बच्चों को और तरह तरह के इमोशंस के बारे में बात कीजिए. व्हाट इज सैड, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज डिस्ट्रेस, व्हाट इज डिप्रेशन, व्हाट इज वॉइड.
ओके, व्हाट डज ऑल दिस मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमोशंस? तो इससे फायदा आप करेंगे कि मैम इससे फायदा क्या होगा? फायदा इससे यही होगा माय डियर टीचर्स कि आपका बच्चा जब भी किसी इमोशन को गो थ्रू करेगा, इमोशन हो सकता है मेरा बच्चा समझता ही नहीं कि मैं किसी इमोशन के कंट्रोल में हूं, हो सकता है आपका कोई बच्चा सुसाइड करने चाहता है, गॉड फॉरबिड, वो सुसाइड करना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि एक इमोशन के अंतर्गत आकर मैं सुसाइडल टेंडेंसी डेवलप कर रहा हूं या कर रही हूं। बच्चा समझता है मेरी लाइफ में कुछ नहीं, मैं सुसाइड कर लूं। नहीं, एक्चुअली हुआ क्या है कि बच्चा डिप्रेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है, अनहैप्पीनेस में है, और बच्चा ये समझता है कि इससे निकल ही नहीं पाऊंगा, इसलिए वो सुसाइड करता है। इट इज नॉट कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई, उसे पता ही नहीं है कि इमोशन चेंज हो जाएगा। अगर मैं ये रास्ता पकड़ूं तो मेरा फीलिंग्स चेंज हो जाएगा, मैं डिप्रेशन से बाहर आ सकता हूँ, मैं फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ सकता हूँ, मैं सैडनेस से बाहर आ सकता हूँ। वो समझता है दैट इज द एंड, दैट इज अ ब्लैकआउट ऑफ हिज लाइफ, और वो बच्चा सुसाइड अटेम्प्ट करता है। Are you understanding? So if you teach the child how to identify your emotions, and then if you teach the child that emotions are changeable, वो चेंज होते रहते हैं हमारी जिंदगी में। ऐसा तो नहीं कि हम सुबह दुखी थे तो अभी भी दुखी हैं, सुबह खुश थे तो अभी भी खुश हो सकते हैं, दिन भर में ऐसा कुछ हो गया मैं दुखी हो गई, मैं गुस्से में आ गई, दैट्स आल्सो एन इमोशन। मेरे अंदर एंगर हो गया, मेरे अंदर एजिटेशन हो गया, मेरे अंदर हेट्रेड डेवलप कर गया। सो मेनी थिंग्स कैन हैपन। Are you getting my point, what I'm trying to say? So variety of emotions are there. Talk about this in the class. Children may not be aware of so many emotions. They may not be knowing the names. और उनके अंदर जो हो रहा है, हो सकता है वो नाम नहीं जानते हो, लेकिन जब आप क्लास में डिस्कस करोगे तो बच्चा उसका नाम जान जाएगा। बच्चा अच्छा, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत भूख लगी इस वक्त, बहुत बहुत बहुत, आप 2 दिन से कुछ नहीं खाए हो, आज कौन सा दिन है, आज थर्सडे है, आपका बुधवार का कोई व्रत था, आपका मंगल का कोई व्रत था, और आपने कुछ नहीं खाया, और इस वक्त आपको शाम के 6 बजे खाना है, और अभी मिताली मैम 4:30 से 5:30 का सेशन लेनी है, आपको बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लग रही है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको भूख नहीं लग रही है, पता है आपको क्या हुआ है? आपके बॉडी के अंदर ये हार्मोनल सिक्रीशन हो गया है जो आपको एहसास दिला रहा है कि आपको भूख लगी है। आप समझने मेरी बात? आपकी भूख थोड़ी सी ही सही लेकिन कम हो जाएगी। आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे यार ये भूख थोड़ी है, दिस इज हार्मोनल सिक्रीशन जिसकी वजह से मुझे ऐसा फील हो रहा है। दैट कैन बी कंट्रोल्ड, दैट हार्मोन सिक्रीशन कैन बी कंट्रोल्ड। Are you understanding? So give this awareness to your students that emotions are everywhere. You are not under control of emotions. Emotions should be under your control, and they are changeable, they are reversible. Situations will change. Clear? So very first thing is identification of emotions. Now, okay, so emotions are a part of everyone's lives. They are neither good nor bad. How they are expressed is more important. अभी मुझे बहुत रोना आ रहा है, लेकिन मैं सेशन ले रही हूँ, मैं जोर जोर से नहीं रो सकती, आप सबका समय बर्बाद होगा। लेकिन मैं अगर अपने इमोशंस को थोड़ी देर के अंदर दबा दूं, मैं वेट करूं सेशन कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं रोऊंगी, then so many people will be saved from a negative emotion. So how you express them, when you express them, where you express them is very, very important. Next, developing awareness of emotion is a skill that builds over time and needs to be practiced. मैं aware हूं मेरे अंदर क्या हो रहा है, ठीक है? Becoming aware of our emotions and labeling them is the first step in managing challenging emotions. सबसे पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत बहुत आप कोरिलेट कर सकते हैं उसके एकेडमिक्स के साथ। जैसे एक बच्चा है, उसको अच्छे नंबर नहीं आए, आपने उससे पूछा कि बेटा आपको क्यों अच्छे नंबर नहीं आए इस सब्जेक्ट में, आपको क्या महसूस होता है? तो आपको 2 टाइप के आंसर्स मिलेंगे। एक बच्चा कहेगा आई डोंट नो मैम, आई डोंट नो सर, पता नहीं क्या हुआ, मैंने तो पढ़ाई की थी, मुझे अच्छे नंबर नहीं आए। एक दूसरा बच्चा होगा, वो कहेगा यस सर आई अंडरस्टूड, मुझे एक्सप्लेनेशन में थोड़ा और डिटेल में जाना चाहिए था, मुझे आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखना चाहिए था, मैंने थोड़ा पैराग्राफ वाइज और थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, इसकी वजह से इलस्ट्रेशंस में मेरे नंबर थोड़े कम हो गए। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू किड्स? दोनों को कम नंबर आए, लेकिन दोनों में के बीच में फर्क क्या है ये बताओ? वन नोज what are the ways of improving, the other doesn't know. वो अगली बार भी चांसेस are उसको अगली बार भी कम नंबर आए, लेकिन जो अवेयर होता है उसमें चांसेस हैं कि अगली बार वो गलती नहीं दोहराएगा। Are you understanding? So please remember, awareness is the first step to managing emotions. Now next, so we go to the next, managing challenging emotions. अब आपके अंदर एक challenging emotion है,
इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। हाउ टू मैनेज, सारा खेल मैनेजमेंट का ही है, हाउ टू मैनेज दिस। सो मैं इसमें आपको एक केस स्टडी देती हूँ, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। बच्चों को आप कहेंगे देखो बेटा, गुस्सा नहीं आने के लिए ये करो, ये करो, ये करो, 5 बातें कहेंगे, बच्चा नहीं सुनेगा, कल को भूल जाएगा। लेकिन आप एक एग्जाम्पल, एक केस स्टडी से उसको समझाइएगा, उसको जिंदगी भर याद रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मालविका इज एन एक्सलेंट कबड्डी प्लेयर. Her name did not appear this time in the kabaddi tournament to be held in the village. When Malvika heard about this, she went to the village headman and fought with him. मालविका बहुत अच्छी कबड्डी प्लेयर है, उसका नाम इस बार के सिलेक्शन लिस्ट में नहीं था। जैसे ही उसे पता चला, वो विलेज के सरपंच के पास गई और लड़ाई करने लगी उससे। अब लड़ाई में किस एक्सटेंट तक लड़ाई की ये यहाँ नहीं दिया हुआ है। अब आप बताओ, अब आप बच्चों से क्वेश्चंस करो कि व्हाट आर द इमोशनल फीलिंग्स ऑफ मालविका। कोई बताए प्लीज चैट बॉक्स में इस वक्त मालविका क्या फील कर रही है। व्हाट आर द इमोशनल फीलिंग्स ऑफ मालविका। एंगर, वेरी गुड, एंगर। टर्मोइल, वेरी गुड। और कुछ आंसर्स आ सकते हैं क्या। एंग्री, वेरी गुड। उसके अंदर से गुस्सा काम कर रहा था। इग्नोरेंस, फ्रस्ट्रेशन, गिल्टी। Was she feeling guilty? अगर वो गिल्टी फील करती तो क्या वो जाकर लड़ाई करती। वो तो दूसरे को गिल्टी समझ रही है ना। फ्रस्ट्रेटेड, वेरी गुड। नेक्स्ट, व्हाट डज मालविका विश टू डू इन दिस सिचुएशन। वो क्या करना चाहती है इस वक्त। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है, गिल्ट में है, एंगर में है। वो क्या करना चाह रही है। वो क्या, व्हाट डज मालविका विश टू डू इन दिस सिचुएशन। मालविका विशेस टू एंटर द टीम, वेरी गुड। लेकिन मालविका इस वक्त कर क्या रही है। व्हाट इज शी wants to join the team, किसी भी तरह से लड़ाई करके, झगड़ा करके, मार के, पीट के, मुझे टीम में जगह दो दो दो। दिस इज व्हाट एक्चुअली मालविका इज ट्राइंग टू डू। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। डिड यू कंसिडर हर एक्शंस हेल्दी और अनहेल्दी। अब आप बच्चों से पूछे बेटा, मालविका टीम तो ज्वाइन करना चाहती है, बहुत अच्छी हसरत है उसकी, वेरी गुड इंटेंशंस, बट हैज शी डन समथिंग करेक्ट। Is that the way to join the team? Is that the way to join the team? Of course, all students mostly will say unhealthy. हो सकता है कोई बच्चा कहे नहीं मैम, उसने ठीक किया, विलेज का सरपंच बहुत बदमाश था, वो तो अच्छी प्लेयर थी ना, यहाँ लिखा हुआ एक्सीलेंट। लेकिन आप बच्चों को तब समझाएंगे क्या लड़ाई करके आप कुछ हासिल कर सकते हो। क्या पावर गेम से कोई टीम में घुस सकता है। उसने और गुस्सा दिला दिया ना विलेज हेडमैन को। अब तो वो अच्छा खेलेगी तब भी उसको नहीं लेंगे क्योंकि उसके पास पावर है। नेक्स्ट, will she be able to fulfill her desires by the kind of action she is showing towards a teacher? क्या मालविका कभी भी इस तरीके से टीम में घुस पाएगी, हाँ या ना। क्या मालविका झगड़ा करके टीम में घुस पाएगी। वेरी, आई थिंक वेरी ऑब्वियस आंसर इज नो। व्हाट इज अ हेल्दी वे ऑफ बिहेविंग। तब बताओ बच्चों, मालविका क्या कर सकती थी। क्या करने से उसको टीम में जगह मिल जाएगी। क्या कर सकती थी। मान लो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, तुम कुछ डिजर्व करते हो लाइफ में लेकिन तुमको नहीं मिला, तो तुम क्या कर सकते हो उस सिचुएशन में। पोलाइट इंटरैक्शन, वेरी गुड। शी कैन कन्विंस द पर्सन कि सर मैं सच में अच्छा खेलती हूँ, आप एक मौका देकर देखो, आप एक रीटेस्ट ले लो, आप एक बार मुझे चांस दे दो। या मालविका क्या कर सकती थी, और कन्वर्सेशन के अलावा मालविका क्या कर सकती थी। कन्वर्सेशन के अलावा और क्या कर सकती थी। रिक्वेस्ट के फॉर्म्स पे चाहिए थोड़ा एविडेंस दे सकती थी। वेरी गुड, वंडरफुल आंसर कि सर देखिए मैंने 2001 में ये मैच जीता, 2002 में ये जीता, 2003 में ये जीता। वेरी गुड। somebody is telling argumentative, arguments are good but to be presented in a very polite way, to be presented in a very polite way. She could have given a written application. She could have given a written application right from the village headman to the top level कि भैया अगर उसको लगता है कुछ गलत भी हुआ तो सबके सामने आ जाए, सबके सामने उसका टैलेंट आए। She could have written that. She could have spoken about it. She could have asked for another chance. ये सारी चीजें वो कर सकती थी। So now आप बच्चे को क्या सिखा रहे हैं इस वक्त। Thank you so much, dear educators, for your support in the chat box. Thank you so much. You've been with me throughout. Thank you. So what do we learn from this situation? We learn that situations can be against us. Emotions may pull us down, but if we know how to manage our emotions, then nobody can throw us away. Okay, very good.
Now, there are some more case studies. I will not discuss it right now because of lack of time. But these are, again, some case studies. You can take a screenshot of this and keep. Okay. Now, next is, what do we conclude from here? We conclude that emotions are natural, but they are not good nor bad. But what is important is to manage our emotions. So first step, what have we done? We have identified our emotions. We have labeled our emotions. And the second phase, we have learned how to express them properly. So, this comes through practice, practice, practice. आपको गुस्सा आया, आपने आइडेंटिफाई किया, मुझे गुस्सा आया, आपने अपने गुस्से को कंट्रोल किया. आपको बहुत हंसी आ रही क्लास के बीच में, आपने आइडेंटिफाई किया कि अरे मुझे तो बहुत हंसी आ रही है, लेकिन अभी क्लास चल रहा है. I cannot do it. I'll do it later on. How you are managing your emotions, उसको बार बार प्रैक्टिस करिए, करते 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 वो आदत हो जाती है. And then experts, they learn how to manage their emotions and they play with their emotions very well. Okay. Next is SWOT analysis. You should know your strength. मुझे हमेशा फ्रस्ट्रेशन ही फील होता है, अरे यार वो अच्छा नहीं है, दुनिया अच्छी नहीं है, भगवान अच्छा नहीं है, मेरे डायरेक्टर सर अच्छे नहीं है, मेरे कलीग्स अच्छे नहीं है, मेरे टीचर्स नहीं अच्छे हैं, मेरा वो नहीं सपोर्ट करता. ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड फ्रस्ट्रेटेड. ये क्या है? व्हाट इज दिस? माय वीकनेस. लेकिन मेरी स्ट्रेंथ भी तो होगी ना कुछ. क्या हो सकता है मेरा स्ट्रेंथ? सो टीच द चिल्ड्रन दैट हर महीने एक बार अपना स्वॉट एनालिसिस करो और देखो कि तुम्हारे स्ट्रेंथ्स में कुछ इंक्रीज हुआ या नहीं, तुम्हारे वीकनेसेस में कुछ डिक्रीज हुआ या नहीं, तुम्हारे अपॉर्चुनिटीज कुछ एक्सपैंड हुए या नहीं, तुम्हारी थ्रेट्स कुछ कम हुए या नहीं. तो कहीं प्लस होना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस एंड राइट हैंड साइड में कुछ माइनस होते जाना चाहिए. Many of us don't know how to do SWOT analysis. We think we cannot do anything more than this. For example, teachers, आपको एक नई नौकरी मिलती है. अभी बीपीएससी का बहुत फैशन है. बीपीएससी की एक नौकरी आपको मिल जाती है. मान लीजिए आप भी एग्जाम देते हैं, आपको नौकरी मिल जाती है. क्या हम SWOT एनालिसिस करके जा रहे हैं? सिर्फ यही सोच रहे हैं क्या कि वो एक सरकारी नौकरी मुझे जाना है, वेरी गुड, आप जाओ. लेकिन कोई भी डिसीजन अपने लाइफ में लो, उसका SWOT एनालिसिस करो कि मैं अगर बीपीएससी में जाऊंगा तो ये मुझे मेरे फायदे होंगे, ये मेरी अपॉर्चुनिटीज होंगी और ये मेरे नुकसान होंगे. मैं ये काम करने जा रहा हूं, मैं हर महीने 5,000 का रिकरिंग खोलने वाला हूं. क्या क्या होगा उससे? उसके स्ट्रेंथ्स क्या है, उससे मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसका नुकसान क्या है और उसके थ्रेट्स क्या है. So please teach the children to do their SWOT analysis. Strengths, which will always help them. Weaknesses, which will be harmful for them. Opportunities, which will come from outside. They are external opportunities. अगर मैं प्राइवेट में रहूं यार, तो मैं विदेश में भी किसी ग्रुप में जाकर ज्वाइन कर सकता हूँ, मैं फलाना जगह जा सकता हूँ, मेरी सैलरी ऐसे ऐसे बढ़ सकती है. लेकिन अगर मैं सरकारी नौकरी करूं तो मेरी सैलरी हमेशा एक स्लैब में ही बढ़ेगी. मुझे बिहार में ही उसी गांव में या किसी और गांव में या किसी और जगह रहना होगा, या मैं फैमिली के साथ रहूंगा, वो मैं फैमिली से अलग रहूंगा. सो यू आर गोइंग टू सी व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर द थ्रेट्स, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर द वीकनेसेस. ये करने के बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको ये देखना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड भारी होना चाहिए. Strengths and opportunities should be more and weaknesses and threats should be less. अगर वीकनेस और थ्रेट ज्यादा है, उस काम को मत करिए. अगर वीकनेस एंड थ्रेट कम है, स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, प्लीज गो अहेड फॉर दैट. So SWOT analysis actually helps us in identifying our strengths, our weaknesses, our opportunities, and our threats. So go for a SWOT quite often. Whenever you cannot find an answer, और जब भी आपको भगवान के सामने बैठने का मन करता है ना, हम लोग बहुत लोग बैठते हैं कहते हैं भगवान मुझे रास्ता दिखा. तो ये SWOT एनालिसिस आपका भगवान है. इट विल टेल यू कि भैया आप यहाँ जाओ या ये काम करो या ना करो. सो SWOT एनालिसिस बच्चों को सिखाइए, खुद भी करिए, एंड आई एम श्योर आप हमेशा अच्छे डिसीजंस लेंगे लाइफ में. बहुत समय हमारे साथ ऐसा होता है, हम कोई डिसीजन लेते हैं लाइफ में और उसके बाद हम बाद में पछताते हैं, रिग्रेट करते हैं, यार मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे वही काम करना चाहिए था. तो अगर SWOT एनालिसिस करके काम करेंगे तो रिग्रेट कभी नहीं करेंगे. SWOT analysis will teach you. SWOT analysis will make you understand कि आप कोई काम, अच्छा कोई काम कैसे करें और बुरे काम को कैसे इग्नोर करें. उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ें, उसमें मत जाएं. So strengths are your internal resources, remember. Weaknesses are specific skills or abilities which you need to improve upon. Opportunities are external factors which are favorable for us, and threats are obstacles which will come on the way. Okay. Now, what do we learn from here?
we learn that identifying one's strengths can promote the well-being. Strengths can be applied to manage personal challenges as well as make good use of available opportunities. यहाँ मैं आपको well-being के बारे में थोड़ा बताता हूँ. I'm sure all of you know the meaning of well-being. फिर भी मैं बताती हूँ. Well-being is a state जहाँ आपका mental, आपका physical, आपका emotional, आपका mind, सारे चीज आपके एक अच्छी स्थिति में है. And you feel happy. That is a state where you are happy. You feel healthy, not only physically, but mentally, but emotionally. ये सारे factors जब अच्छा good feeling देते हैं आपके अंदर, then it is you are supposed to be in a state of well-being. Okay, is this clear? I'm sure. Now let us move to the fourth activity, and that is core strength. My core strength. I have, I am, I can. Like, if you ask me, I will always say my core strength is my family. In family also, I would like to make it one word. My core strength is my husband. Because अगर वो मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद आज मैं वो कुछ भी नहीं कर पाती जो मैंने किया है लाइफ में. अभी मैं आपके साथ 4:30 से 5:30 का सेशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि my husband, when he comes back from office, he will not start shouting at me कि चाय क्यों नहीं मिली, आप सेशन ले रहे हो. You are understanding what is the meaning of my core strength. It can be anything. It can be a book. It can be a spiritual power. It can be your energy. It can be a physical fitness. क्या आपका core strength क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा. तो इसको थोड़ा सा आपको समझाती हूँ क्योंकि इसके अब आप पूछेंगे मुझसे, समझाने के बाद आपको बताऊं, पूछेंगे आप मुझसे मम्मी आइडेंटिफाई करके होगा क्या. जब आपको पता कि स्ट्रेंथ क्या है तो आपको क्या मिलेगा. यू विल गेट ताकत, यू विल गेट पावर फ्रॉम विद इन. यार मिताली, यू कैन नॉट गिव अप, यू हैव दिस. चलो कोई बात नहीं, तुम आप लोगों में से बहुत लोगों को मुझे पता है आपके पास 10-20 बीघा जमीन होगा तो आप कहते चलो रिस्क ले लो, है ना जमीन, जरूरत पड़ेगी तो बेच देंगे. दिस इज अ कोर स्ट्रेंथ. आप आगे बढ़ सकते हैं अगर आपके पास पीछे वो बैकअप है, वो स्ट्रेंथ है, वो बैकबोन है. ठीक है, तो सिर्फ आपके पास क्या है वो जानना काफी नहीं है. आपको ये भी जानना चाहिए मेरे पास क्या है और मैं क्या और पा सकता हूं. Are you understanding? मेरे पास बहुत जमीन है, इसके अलावा क्या हुआ, फिर भी मैं अच्छी नौकरी पा सकता हूं, मैं टैलेंटेड हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बात कर सकता हूं, मेरे पास स्किल्स है. सो व्हाट आई हैव, व्हाट आई एम, व्हाट आई कैन. मेरे पास बहुत जमीन है तो मैं फार्मर क्यों नहीं बना, मैं बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करके बहुत पैसा क्यों नहीं कमाया, नहीं कमाया ना. मेरे पास बहुत जमीन है फिर भी मैं कौन हूं, मैं एक एजुकेटर हूं, मैं एक टीचर हूं. मैं क्या बन सकता हूं, मैं प्रिंसिपल बन सकता हूं, मैं डायरेक्टर बन सकता हूं, मैं जमीन को बेचकर अपना एक स्कूल खोल सकता हूं. सो आई हैव, आई एम एंड आई कैन. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Okay, so let's try to understand a little more what is the meaning of I have, I am and what I can. क्या हो ये देखिए. Interpersonal strengths जैसे feelings, attitudes, benefits. For example, I'm honest. I believe that we should work hard if we want to achieve our dreams. See, I am honest. I'm punctual. I am. आप कह सकते हो अपने बारे में, मैं तो नहीं कह सकती. आप कह सकते हैं I'm very fit. मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, फिजिकली मैं बहुत फिट हूँ, मैं रोज योगा कर सकता हूँ 4 घंटा. दिस इज आई एम. ओके, आई थिंक पॉजिटिव. यू आर, ये आप हैं. ये आपको स्वॉट एनालिसिस से भी मिल सकता है आप कौन है. आई हैव, मेरे पास क्या है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मेरे पास ये है, वो है, रिसोर्सेस. ठीक है, आप समझ सकते हैं मम्मी पापा भी एक रिसोर्स होते हैं, तभी अमिताभ बच्चन कहते हैं मेरे पास माँ है. So that could also be a resource for you. So these are the support systems that I have. I can. मैं हूं ये, मेरे पास है ये, इसीलिए इन दोनों की मदद से मैं यहां तक पहुंच सकता हूं. जैसे मेरे पास I'm honest. I have a loving aunt who supports and guides me. I have 2 close friends with whom I share. इनकी मदद से मैं क्या बन सकता हूं, इनकी मदद से मैं इस साल नेट का एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं और क्वालिफाई करने के बाद एक लेक्चरर बन सकता हूं. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ऑनेस्टी है, आपके पास सपोर्ट है और इसकी मदद से आप ये कर सकते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? इंडिया के पास मोदी है. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कमेंट. आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो यू शुड नो दिस. होता है बस इतना ही होता है ना माय डियर फ्रेंड्स कि व्हेन यू नो कि आपके पास ये है, it gives you power, it gives you energy,
It gives you motivation. It makes you free from fears. मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, अगर मैं गिर भी गया तो मैं संभल जाऊंगा. Are you getting my point? So this is very important कि आपको अपने strengths पता हो. प्लीज आप बच्चे को बताएं उनके strengths. अगली बार कोई बच्चा सुसाइड करने के पहले, हारने के पहले, क्विट करने के पहले अगर अपने स्ट्रेंथ्स को याद कर लेना, आई एम श्योर वो नहीं क्विट करेगा. वो ये याद रखेगा कि अरे मेरे पास ये है, मेरे पास मम्मी है, मेरे पास पापा है, मेरे पास इतनी डिग्रीज है, मैं नहीं हार सकता, मैं जरूर आगे बढ़ूंगा, जरूर कुछ करूंगा अपने लाइफ में. Getting my point? Okay. So what do we understand from this summary? Core strengths or positive traits can come from within or can be developed. हो सकता है आज मैं बहुत फिट नहीं हूँ, 6 महीने बाद हो जाऊं और आप देख कर मिताली मैम इतनी फिट हो गई. Then after 6 months that will be my I have. Okay. अभी हम कह सकते हैं I can, लेकिन उस समय क्या होगा? I have. तो I have, I can, I am बदलते रहता है. ये जरूरी नहीं कि आपने जहां से शुरू किया लाइफ के एंड में वही आपका I have, I can, I am रहे. That can change also. Next is, as time passes, new strengths will be added. Okay, as I told you, knowing your strengths and people who you can reach out to when faced with challenges can help individuals deal with situations better. As I told you, it gives you power, it gives you freedom, it sways away your fear. Okay. Now, next, we come to the next activity, and this is the second last subtopic for the day. That is understanding mental health. Okay. Understanding mental health. Mental health है क्या? सबसे पहले तो मुझे बहुत तकलीफ होती है कहते हुए, शर्म भी आती है. अभी तक बीइंग द प्रिंसिपल फॉर सो मेनी इयर्स बहुत कुछ खास कर भी नहीं पाए हैं. जब भी आप मेंटल हेल्थ की बात करते हो ना, पता नहीं लोग यही समझते हैं कि मुझे पागल बताने की कोशिश हो रही है क्या, मेरा बच्चा पागल है क्या मैडम, आप मेंटल हेल्थ की क्यों बात कर रहे हो. मेंटल हेल्थ यहाँ मीन्स ओनली पागल. दैट इज नॉट करेक्ट, एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट. जिस तरीके से आपके शरीर के स्वास्थ्य को नापने के लिए हम लोग बीपी चेक करते हैं, शुगर चेक करते हैं, फीवर चेक करते हैं, वैसे ही मेंटल हेल्थ, हमारा ब्रेन आज बीमार है, हमारा मन आज बीमार है. दैट इज मेंटल हेल्थ. अगर अपसेट है तो. और मैं बहुत खुश हूं, कभी कभी आपको फील होता है ना, सुबह आप नींद से उठते हैं, आपको लगता है आज बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ. दैट इज मेंटल वेलबींग. हो सकता है आपके शरीर में तकलीफ हो, कभी हो सकता है मैं हल्का सा फीवर हो, मान लीजिए मुझे हल्का फीवर हो जाए और मेरे हस्बैंड उस दिन छुट्टी ले लें और क्या, चलो कोई बात नहीं, भाई फीवर है ना, बोथ ऑफ अस विल स्पेंड टाइम टुगेदर, डोंट वरी, यू आर आल्सो लीव, आई विल आल्सो बी लीव. मेरे जैसा बंदा होगा तो सोचेगा अच्छा हुआ फीवर आ गया, कम से कम इसी बहाने घर पे रहने का मौका मिला, जिसका साथ चाहिए था वो मिल गया. तो आपको क्या होगा, फिजिकली आप थोड़े डाउन जरूर हैं, लेकिन मेंटली आप बहुत ऊपर हैं, बहुत अच्छी स्थिति में हैं. सो मेंटल हेल्थ इज रिलेटेड टू सो मेनी थिंग्स. It's not that आप पागल है इसलिए आपका mental health खराब है. There are so many things. So if you look at this figure very closely, you'll observe mental health is related to physical health, social health, environmental health, economic health, and psychological health. मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देकर आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. Mental health is similar to physical health as we feed to our brain. That's very true, very true. Okay, consult psychologist. मैं छोटे छोटे टिप्स आपको देती हूँ, हो सकता है आपको साइकोलॉजिस्ट से जाने से बच भी जाए आप. देखिए, फिजिकल का मतलब क्या हुआ, आज अगर मेरे पैर में एक दर्द हो रहा है, ठीक है, आप कितना भी इग्नोर करिए, कभी ना कभी वो दर्द आपको टीस मारेगा और आपको याद आ जाएगा यार पैर में बहुत दर्द है. तो वो जो याद आपको आएगा कि मेरे पैर में दर्द है, वो जो टीस होगी आपके अंदर, वो आपको तकलीफ देगी. और जब आपको तकलीफ देगी तो वो इंपल्स आपके ब्रेन में जाएगा और आप फील करोगे कि आप बहुत 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 दुखी हो. Are you understanding? तो आपका मेंटल हेल्थ क्या हो गया, आपका मेंटल हेल्थ सफर किया. ओके, थैंक यू अर्चना जी. नेक्स्ट, इन्वायरमेंट. जैसे मान लीजिए आप याद कीजिए उन भयानक दिनों को जब कोविड था. मान लीजिए आप बहुत स्वस्थ थे, आपको कोविड नहीं हुआ, बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं हुआ, आपने खूब ये इंजॉय किया अपने घर पे, लेकिन आप बाहर जाते थे क्या? आपके हस्बैंड या आप कभी भी बाहर सब्जी लेने जाते थे, दवाइयां भी लेने जाते थे, आपको डर लगता था कहीं मुझे इन्फेक्शन नहीं हो जाए, जा रहा हाथ धोना, कपड़े धोना, सैनिटाइजर यूज करना. तो ये जो इन्वायरमेंट था उसका भी एक असर हमारे दिमाग पर होता है और वो आपको दुखी करता है. आई एम श्योर पहला कोविड तो हम लोग सबने खाना बना बनाकर गुजारा,
लेकिन दूसरे टाइम जब कोविड हुआ, ऑल ऑफ अस वेर समवेयर, यू नो, ईच वन ऑफ अस वाज वेरी अफ्रेड, वी वर नॉट हैप्पी. व्हाई वी वर नॉट हैप्पी? हमारे बगल में किसी को हुआ है, अगर आपके बगल में ईश्वर न करे किसी की डेथ हो जाए, आई एम श्योर उस दिन आप हैप्पी नहीं फील करोगे. Because our immediate environment, not only immediate, I'm using the wrong word actually, our environment affects our mental well-being. Am I right? फिर इकोनॉमिक, ऑब्वियस है. अभी तो महीने का, आज कौन सा दिन है, आज 18 तारीख है, तो अभी तो पैसे थोड़े बहुत बचे हुए हैं हमारे, लेकिन हम लोग तो टीचर्स हैं, ज्यादा पैसे होते नहीं है हमारे पास. जैसे ही महीने का 25 से 30 का बीच होता है, वी स्टार्ट वेटिंग फॉर आवर नेक्स्ट सैलरी. आज हम जितने खुश हैं क्योंकि आपके पॉकेट में कुछ पैसे हैं अभी भी बचे हुए, उतने खुश आप 30 को नहीं होते हैं, क्योंकि आपको लगता है यार सारे पैसे खत्म हो रहे हैं, कब सैलरी आएगी, कब सैलरी आएगी. छोटी से छोटी चीज हमारे ब्रेन को इफेक्ट करती है, हमारे मेंटल हेल्थ को इफेक्ट करती है. नेक्स्ट, साइकोलॉजिकली. अब आपको बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, रात में कोई नहीं आपके घर में, आपको डर लग रहा है, बिजली चली गई, जो मूवीज में दिखाते हैं ना, उस समय भी आपका ब्रेन अफेक्टेड होगा, आपको फील होगा कि क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो गया, बाबा जल्दी से लाइन आ जाए. टॉर्च खोजते हैं, इन्वर्टर खोजते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, बिकॉज वी वांट दैट लाइट. साइकोलॉजिकल ट्रेमर है हमारे साथ. तो व्हाट इज मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ इज द सम टोटल ऑफ फिजिकल, सोशल, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग. तो ये वर्ड आता है वेल बीइंग. अगर फिजिकली भी आप फिट है, आप सोशल, सोशल मैं भूल गई थी आपको बताना. सोशल, बहुत बहुत कॉमन एग्जांपल, आपकी किसी के साथ आज लड़ाई हो गई, 4 लोगों ने देख लिया लड़ाई, क्या होता है, आप क्या फील करते हो? क्या आप अच्छा फील करते हो? कितने न्यूज हम लोग आजकल सुनते हैं कि किसी लड़की का, किसी लड़के का कोई ऐसा फोटो चला गया, वायरल हो गया सोशल मीडिया में, जो नहीं होना चाहिए था. इज दैट पर्सन हैप्पी? कैन द पर्सन हैप्पी बी हैप्पी एट दैट टाइम? उतने बड़े एग्जांपल को आप छोड़िए, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ. मैं अगर अपना एक फोटो पोस्ट करूँ एफबी पे या स्टेटस पे लगाऊं अपना कोई फोटो, तो मुझे लगता है हाँ, लोग देखेंगे और कहेंगे मिताली यू आर लुकिंग सो गुड, नाइस नाइस प्लेस, हैपनिंग प्लेस, व्हाट आर यू डूइंग. बहुत 100 लाइक, 200 लाइक भी आ जाए मुझे, अगर एक इंसान एक नेगेटिव कमेंट कर दे, कहाँ गए थे, बैकग्राउंड, इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू विजिट, इस मौसम में इतनी गंदी जगह क्यों सिलेक्ट की तुमने, बस मेरा मूड ऑफ. कोई अगर कहते कि मिताली थोड़ी मोटी लग रही हो तुम, मूड ऑफ, वो 200 लाइक होने के बावजूद मेरा मूड ऑफ हो जाएगा. दिस इज सोशल वेलबींग. आप सोशली रेपुटेड रहना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके आसपास जितने लोग हैं वो सब आपकी तारीफ करें, आपके लिए बड़ा बड़ा सोचे, आपके लिए अच्छा अच्छा सोचे. सो यू नो दिस, all these factors play a very important role in managing our well-being. और well-being से related है हमारा mental well-being. Clear? So physical, social, environment, economic and psychological well-being leads to proper mental health. इसमें से एक भी गड़बड़ाया, थोड़ा बहुत भी गड़बड़ाया, तो आपके मेंटल हेल्थ पे इसका असर होता है. सो याद रखिए, PSEEP ये आपका सही होना चाहिए. तो इसके लिए अपने इमोशंस को मैनेज करके रखना होगा. अगर आप अपने बगल वाले घर के बगल वाले फ्लैट में जो रहते हैं उससे हमेशा लड़ाई करेंगे क्योंकि आपको बहुत गुस्सा आता है, आप बहुत अग्रेसिव हैं, तो आपका सोशल वेलबींग कम हो जाएगा. जैसे ही सोशल वेलबींग कम होगा, आपका मेंटल हेल्थ पे असर होगा. आप अगर फिट नहीं रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, दिन भर जंक फूड खाएंगे, फिजिकली अनफिट हो जाएंगे, आपके मेंटल हेल्थ पे असर आएगा. अगर आप साइकोलॉजिकली हमेशा नेगेटिव सोचिएगा तो आपके मेंटल हेल्थ पे असर होगा. अगर आप पैसे ठीक से यूज नहीं करेंगे, जैसा आए वैसा व्यय, तो आपके मेंटल हेल्थ पे असर होगा. अगर आपके इन्वायरमेंट में कुछ नेगेटिव होगा तो आपके मेंटल हेल्थ पे असर होगा. सो इन सारी चीजों को अच्छा मैनेज करने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने इमोशंस को मैनेज करें. झगड़ा मत कीजिए, लड़ाई मत कीजिए, एग्रेशन मत दिखाइए, एंगर मत दिखाइए, इमोशंस को कंट्रोल करिए. हमेशा अपनी बात कह देने में ही भलाई नहीं होती है, कभी कभी सुनना भी चाहिए. वी हैव टू बी लिसनर्स ऑल्सो. सो जड़ में क्या है? जड़ में है हमारा emotions. I think people have started asking for the attendance link. I think you're not enjoying my session. Now, देखिए, again, these are a few statements. I did badly in my exam and I'm feeling like a failure. क्या हुआ? Mental health down. ये कौन सा फैक्टर है? फिजिकल है? ये बताइए मुझे. I did badly in my exam कौन सा फैक्टर है? Is it physical or social or environmental or economic or psychological? Which factor is it? Which factor is it? I did not do well in my exam. I feel like a failure. It's psychological. आपका psychological factor जहां down हुआ, वहां आपका mental health
अफेक्टेड हो गया. आई कीप थिंकिंग दैट लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, क्योंकि मैं बहुत बीमार हूं. बीमारी की वजह से तो मेरा फिजिकल डाउन हुआ, मेरा मेंटल हेल्थ डाउन हुआ. आई नो माई स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशंस. इसका मतलब आई एम अ मेंटली साउंड पर्सन, मतलब सही वेल बीइंग पर्सन. ओके, नॉट साउंड. Since last month, I find that I've lost interest in everything because I'm sick. Physical down hua, mental health down hua. Are you getting my point? Okay. You can take a screenshot of this and just relate how each situation is either related to physical or social or environmental or economical or psychological. Okay. Now we come to this is okay. I think you've understood this. Now let's come to the last, but the most important point, which I would like everyone here to at least listen and understand and follow in life. That is mindfulness. ईश्वर ने हम सबको माइंड तो दिया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोग यूज थोड़ा कम करते हैं. कुछ लोग, सब लोगों की बात मैं नहीं कर रही, लेकिन हम लोग माइंडफुल होना पता नहीं कैसे भूल जाते हैं. और सेम चीज आप अपने बच्चों को भी ऑब्जर्व कीजिए. वो ऐसे छोटी छोटी कंप्लेंट्स लेकर आपके पास आते हैं, ऐसे छोटी छोटी बातों पे लड़ाई करते हैं, ऐसे छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेते हैं कि आपको लगता है यार कैसा बुद्धू है, क्यों नहीं समझता है कि ये प्रॉब्लम तो ऐसे सॉल्व हो जाएगी. बहुत समय बहुत लोगों को कहते भी हैं, यस माइंडफुल, वेरी गुड एग्जांपल somebody is giving. I forgot to read your name. I mean, it was very fast. So we have to understand, my dear friends, my dear educators, that mindfulness practice की चीज. जैसे आप जितना मैथ्स प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा. आप जितना माइंडफुलनेस 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 प्रैक्टिस करते रहोगे, उतने आप माइंडफुल हो जाओगे. बाय नेचर माइंडफुल हो जाएंगे. कैसे माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस होगा, ये तरीका क्या है इसका, स्ट्रैटेजी. इसका स्ट्रैटेजी मैं आपको बताती हूँ. बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी. देखिए, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में कि एक स्टिमुलस आता है. अब मैंने आपको जोर से एक थप्पड़ मारा, ठीक है, आपको गुस्सा आ गया, तुरंत गुस्सा आता है हमें, और तुरंत हमने पलट कर 2 थप्पड़ मार दिया, एक ही मारा, चलो. द स्टिमुलस एंड देयर इज रिस्पॉन्स. ये आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा. स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच की जगह को जितना बढ़ा देंगे, टाइम को जितना बढ़ा देंगे, आप उतने माइंडफुल हो जाएंगे. किसी ने आपको भद्दी सी गाली दे दी आज, कि जरूरी है कि आप रिवर्ट करो तुरंत. आपको गाली के कंपटीशन में थोड़ी गए हो, जहां उसने आपको गाली दी तो आपको भी गाली देनी है. आप चुप रहिए, थोड़ी देर के लिए चुप रहिए, वहां से हट जाइए, थोड़ी देर के बाद रिवर्ट करिए. Your answer will be very good. You remember one example I gave you? There was a girl who was an excellent kabaddi player. लेकिन क्या हुआ, वो सेलेक्ट नहीं हुई, वो तुरंत चली गई लड़ाई करने के लिए. So you don't have to do this in your life. This is what each one of us, yes, Malvika is doing this. Each one of us has become a Malvika today. So my word for the day for mindfulness is, please don't react. Give response. Stimulus, reaction. उसका नाम ही है रिएक्शन, वो तुरंत होता है. लेकिन आपको क्या करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है. आपको क्या करना है, आपको रिस्पॉन्स देना है. और रिस्पॉन्स कैसे दिया जाता है, सोच समझकर, लॉजिकली एनालाइज करके, उसके बाद आप रिस्पॉन्स देते हैं. आप एग्जाम में देते हैं ना, तुरंत 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 थोड़ी लिख देते हैं. आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तब आप उसका आंसर देते हैं, क्योंकि वो रिस्पॉन्स है. आप देखेंगे हर जगह एमसीक्यू में या क्वेश्चंस में लिखा हुआ रहता है, गिव योर रिस्पॉन्सेज. कहीं नहीं लिखा हुआ रहता गिव योर रिएक्शन, बिकॉज रिएक्शन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव वर्ड. आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको रिस्पॉन्स देना है. अगर आप लाइफ में सिर्फ ये एक मंत्र खुद भी समझ लिए, बच्चों को भी समझा दे, तो एडोलेसेंट एज में लड़ाई झगड़ा, एग्रेशन, कंप्लेन्स अपने आप कम हो जाए. एंड व्हाट विल यू बिकम, यू विल बिकम अ रेजिलिएंट पर्सन, जो बाउंस बैक किया. आपने मुझे थप्पड़ भी मार दिया, मैं चुप रही, लेकिन मैं बाउंस बैक कर रही हूँ विथ मोर पावर, मोर फोर्स, मोर मैच्योरिटी, मोर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज आई हैव नॉट रिएक्टेड, आई हैव रिस्पॉन्डेड. रेजिलियंस वर्ड का जो लोग मतलब अभी बहुत क्लियर नहीं, उनको छोटा सा एग्जांपल देकर समझा दूं. हमारे बॉलीवुड के बादशाह जो हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन, आपको पता होगा एक समय ऐसा था जब ही वाज डिक्लेयर्ड अ बैंकरप्ट. बट टुडे यू लुक एट हिम, व्हाट ही हैज बिकम. ओके, this is called resilience. Resilience means bouncing back, coming back. आप कहीं थे, आप वहां से हट गए,
आप बर्बाद हो गए, आप खराब हो गए, आप चले गए, लेकिन आप हमेशा के लिए नहीं गए, आप सिर्फ कुछ समय के लिए गए, आप वापस आएंगे और ज्यादा फोर्स के साथ वापस आएंगे। इसलिए मैंने कहा उस समय रिएक्ट नहीं करेंगे, बाद में आकर अपना रिस्पॉन्स दर्ज कराएंगे। सो प्लीज रिमेंबर, अगर आपका माइंड, आपका बॉडी, आपका इमोशंस और आपकी स्पिरिचुअलिटी आपके साथ है, तभी वो सब कोहेरेंस में है, देन ओनली यू कैन बिकम अ रेजिलिएंट पर्सन। मैं अपनी बात ही आपको बताऊं, मैं बिल्कुल रिएक्टिव, 100% रिएक्टिव थी, आज भी हूं, बहुत हद तक हूं, लेकिन बहुत हद तक अब रिस्पॉन्सिव भी हो गई हूं। एंड इट इज हैपनिंग विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। हर बार जब गुस्सा आए तो समझाना है अपने आप को, नहीं अभी नहीं, बाद में, नहीं अभी नहीं, बाद में। You have to keep on practicing this and teach your children also to practice. आप उनको ऐसे सिचुएशंस में डाल दीजिए जिसमें उसको गुस्सा आए, लेकिन देखिए कौन कंट्रोल कर सकता है, कौन नहीं कंट्रोल कर सकता, बाद में आप बताइए उनको। सो प्लीज रिमेंबर कि आप फिजिकली बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए आप में, इमोशनल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आप में, स्पिरिचुअल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। मेरे राम है, तुम्हारे कन्हैया है, उसके शिव है, चलो आपस में लड़ाई कर लेते हैं, हु इज द बेस्ट, ये काम हमारा नहीं है। और मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। वी शुड बी ओपन इनफ टू एक्सेप्ट अदर्स थॉट प्रोसेसेस आल्सो। जैसे कि हम लोग आजकल क्या कहते हैं, यू आर करेक्ट, राइट, एंड आई एम आल्सो राइट, बोथ ऑफ अस आर राइट। वो आप रिमेंबर करो, आप कछुए की और हेयर की कहानी बदल चुकी है, अब दोनों रेस में जीतते हैं। पहले क्या हम लोग सुनते थे कि कछुआ जीत गया बिकॉज वो कंसिस्टेंट था, लेकिन आज क्या है स्टोरी, आज की स्टोरी ये है कि कछुआ भी जीतता है और हेयर भी जीतता है, सबको जिताना है, सबके साथ जाना है। क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हमारे एनवायरनमेंट में अगर कुछ नेगेटिव है तो हम खुश नहीं हो सकते। यू आर राइट, आई एम राइट, नोबडी इज रॉन्ग। सबके पॉइंट ऑफ व्यू को सुनना है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू को ऑब्जॉर्व करना है, सबके बात को समझना है। देन ओनली ये कोहेरेंस जब तैयार होगा आपकी लाइफ में, यू विल बिकम रेजिलिएंट, रेजिलिएंट एंड मोर एंड मोर एंड मोर रेजिलिएंट। तो रेजिलियंस प्रैक्टिस करने के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, मैं आपको बता दूं, छोटे मोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, सिर्फ नाम बता दूं आप समझ जाएंगे। योगा इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू बिकम रेजिलिएंट इन लाइफ। Regular exercises, relaxation, and meditation must be a part of your life every day. Part of your life, when I say, I also mean the part of the child's life. That these should be a regular feature of the child's life. You know, when you're doing exercises, when you're doing yoga, actually there's release of positive hormones in our body. And these positive hormones make us happy, happy, happy. तो जब आप एक बार हैप्पीनेस वाले मोड से दिन को शुरू करोगे या शाम को शुरू करोगे, देन द हैप्पीनेस मोड कंटिन्यूज। ठीक है, सो नॉट ओनली टू रिमेन फिट, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड टू बिकम रेजिलिएंट इन योर लाइफ। So please practice meditation, please practice yoga in your daily life, practice mindfulness, practice how to become resilient. Okay, that's all from my side. Thank you. Now the floor is open for your questions if you have any. Thank you so much. You've been a brilliant, what to say, audience or students today. Brilliant, brilliant. Continuously, you've been active on the chat box, and I never felt for a second that this is an online session. Actually, I was getting a feeling as if this is an offline session. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. So I'm stopping sharing and I'm open for your questions if I can answer. I'll try my best. Please. Participants, if you have got any doubt, anything, you can question, you can post it in the chat box. Let's Thank you wait so for much for your love that's flowing in the chat box. Thank you. So first of all, thank you very much, Mitali ma'am. It was marvelous session. Somehow my video is not, you can say some issues are coming up. Anyway, it was marvelous session. If Thank the you. participants are given so many comments to you, that's all because of you, the way you taught today. Thank Really you. speaking, and it is very essential. We are all facing, going through this lot of problems. That's, I mean, now I hope that everybody got the some of idea. So of Ma'am, course one it's question is there in the chat box. If you permit, I would like to answer that. yes, sure, ma'am. Sure, ma'am. There's one question. What is, Mr. Pramod has put up this question. What is the difference between empathy and sympathy? See, first of all, you see the Hindi word, I think you'll understand more. Sympathy is sahanubhuti.
and empathy means paranubhuti. So what is the difference between the two is, suppose you see a beggar on the roadside in this chill weather, and वो आपसे भीख मांगने आया, आपको बहुत दया आई उस पे, और आपने कहा यार इसको दे दो, 200 रुपए दे दो, कम से कम एक स्वेटर खरीद लेगा, कुछ खा पी लेगा, हो गई बात खत्म. यू आर सिंपथाइजिंग विद. लेकिन अगर आप उसी बेगर को उठाकर वहां से नहला धुलाकर एक कोई भी 2000 1000 के जॉब पे रख दीजिए कि वो जिंदगी भर वहां से कमाए, खाए और अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर सके, तो दिस इज नोन एज एम्पथी. क्योंकि जब आप सिंपथी दिखाते हो तो आप ये समझते हैं कि भाई इसके पास कुछ नहीं है, चलो मैं खुद दे देता हूँ, टेम्पररी एक सोल्यूशन हो गया. आपको बहुत तकलीफ हुई उसकी हालत देखकर, आप भावनाओं में बह गए और आपने उसके लिए कुछ कर दिया, कुछ भी कर दिया. कोई आपने 200 दिया, कोई 2000 भी दे सकता है, कोई 2 लाख भी दे सकता है. लेकिन जब आप परानुभूति में हैं, जब आप एम्पथी में हैं, तो आप ये सोचेंगे कि वो एक बेगर है, वो रोड पे भीख मांग रहा है, वो रोज भीख मांग कर खाना खाता है, रोज उसको इतने देर भूख का सामना करना पड़ता है, इतनी ठंड का सामना करना पड़ता है, धूप का सामना करना पड़ता है, बारिश का सामना करना पड़ता है, उसके पास कोई घर नहीं है, उसकी फैमिली भूखी होगी, वो रोड पे चल चल के उसके शरीर पे धूल सन गया है. आप उसकी जगह पे रह के सोच रहे हो, यू आर पुटिंग योरसेल्फ इन समबडी शूज एंड थिंकिंग. तो इतनी सारी समस्याएं उसकी कैसे दूर होंगी? उसको एक जॉब दे देते हैं, उसके पास घर होगा, उसके पास परिवार होगा, उसके पास रोज खाना होगा, उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं होगी, ठंड नहीं लगेगी, गर्मी नहीं होगी, बरसात नहीं होगी. आपने इतना सोचा उसके बारे में और आपने सोल्यूशन, एक परमानेंट सोल्यूशन निकाला कि मैं इसको एक जॉब दिलवा देती हूँ इसके कैपेसिटी के अनुसार, इसके कैपेबिलिटीज के अनुसार. दिस इज नोन एज एम्पैथी. So when you think staying in the place of another person exactly like that person is thinking, that is known as empathy. And when your thought process is temporary, for some time you are just feeling sorry for somebody, then that is known as sympathy. I hope you have been able to understand, Pramodji. I'm sure that everybody understood that what is sympathy and empathy. Sympathy is very short term and empathy is long terms. And short. Very nice session. Really Thank you, ma'am. speaking, all the members has given a lot of comments to you, positive comments to you. It's absolutely right. And you had chosen very good topic. It's everybody, child, so we also gone through it. That's the most important things we learn. Thank you, Mitali ma'am. Thank you on behalf of the participants, as well as from the Arivartha Sahodaya School Complex, and from on behalf of the training coordinators too, and all the executive members, and above all to the our founder chairman from Dr. CB Singh, to extend my heartfelt thanks to you that the wonderful session was keep on Shavaria, keep joining with us and Sure. train. Thank you, ma'am. Thank you Participants, so much, ma'am. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. participants, already link has been sent for the attendance link along with attendance. Kindly please mark with the capital letters. Some instructions are given in the link. Kindly follow the instructions and do accordingly. When your name used to be, the column is that name, write in capital letters. Don't write yes, no, school name or anything. You should have three things in your hand. One is your ID, through which the registration has been done. You have to mention that ID only. Second thing is your school code, and the third thing is affiliation number. Rest you know that your name, and that along with that, this one quiz link. I'm sure that everybody able to do it very with this. Thank you very much. Thank you, Himanshu sir. Over to Himanshu sir.